Now let's move on to the second part, and that's related to the beautiful place Kurg. And most of you must have visited this rainforest over here and the spice garden and all. So Kurg is a coffee country. Actually, we call it's a village famous for its rainforests and spices. Now, midway between Mysore and coastal town of Mangalore, of course, you must have visited this place, so you must be knowing that it's midway between Mysore, learn it, and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven. Actually, it's a piece of heaven, beautiful place that must have drifted from the kingdom of God. So it actually is said that it's like heaven on earth. जैसे कश्मीर को लोग कहते हैं heaven on earth. Kurg is equally beautiful but in its own way. This land of rolling hills, that is lot many, you will see one after the other hills, is inhabited, means here, people who live, right? So this land is inhabited by a proud race of martial men, right? Martial art जो करते हैं, we call them martial men. तो यहाँ पे एक रेस रहती है, रेस दैट इज as we had done in SS first chapter, the various tribes that came, like Mongoloid and Aryans and Dravidians. तो ये जो जगह है, this land of rolling hills, यहाँ पे the people who live, they are martial men, beautiful women and wild creatures you see around. And Kurg or is called also as Kodagu. The smallest district of Karnataka is home to evergreen rainforests, spices, coffee plantation. So this region, which is known as heaven on earth, that is Kurg or also known as Kodagu, learn it, is the smallest means सबसे छोटा district in Karnataka, and is full of evergreen rainforest. And that you had already learned in 9th standard about evergreen rainforest. Throughout the year it remains green and dense forest they are. Then they have lot many spice gardens. They have coffee plantations all over. Evergreen rainforest cover about 30% of this district. मतलब कि 30% Kurg is covered with evergreen rainforest. During monsoon, it pours enough to keep many visitors away. और ड्यूरिंग मानसून ऑफ कोर्स विजिटर्स कम जाते हैं यहाँ पे क्योंकि हेवी रेनफॉल इट एक्सपीरियंसेस एंड द सीजन ऑफ जॉय एक्चुअली कमेंसेस दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. सो द ब्यूटिफुल सीजन, द मोस्ट एंजॉयबल सीजन टू गो टू कुर्ग इज बिटवीन सेप्टेम्बर एंड मार्च. द वेदर इज परफेक्ट, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे थोड़े बहुत शावर्स हो जाते हैं. That is, some showers are thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee. Invigorating, that is energizing, the one that gives you energy. So जहाँ पे भी तुम घूमो तो you have that fragrance of coffee in the air. Coffee estates and colonial bungalows, that is huge bungalows, stand tucked, that is located under tree canopies in prime corners. Prime corners मतलब main जो जगह होती है इस पर्टिकुलर टाउन की. यू वुड सी ब्यूटिफुल बंगलोज एंड कॉफी एस्टेट्स ऑल ओवर राइट अंडर द ट्री कैनोपीज. द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल, मतलब यहाँ के लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, बहुत इंडिपेंडेंट, फ्री बाय नेचर. सो दे आर फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट. मतलब शायद उनके जो फोर फादर्स थे they were of Greek or from Arabic. The culture that they follow is of Greece or Arab. As one story goes, now let's see what the story tells us about Kurg and his people. As one story goes, a part of Alexander's army moved towards the south along the coast and settled here. तो कुछ बहुत 100 साल पहले, काफ़ी उससे भी ज़्यादा माना जाता है ये. इट इज सेड ओवर हियर एज वन स्टोरी गोज, मीन्स एज इट इज बिलीव्ड कि एक ऐसी स्टोरी मानी जाती है कि अलेक्जेंडर की जब आर्मी यहाँ पे इंडिया को कैप्चर करने आई तो दे मूव्ड अ पार्ट ऑफ दैट अलेक्जेंडर्स आर्मी. पूरी फौज नहीं, लेकिन उस फौज के थोड़े बहुत लोग
They moved to south of India and they settled here. When return became impractical, जब इन थोड़े लोगों के लिए रिटर्न होना नामुमकिन हो गया था, इट बिकेम इम्प्रैक्टिकल, तब वो यहीं पे रुक गए, राइट, टू द साउथ ऑफ इंडिया. एंड दिस पीपल मैरिड अमंग द लोकल पीपल. दैट टाइम वहाँ पे रहने वाले जो लोकल लोग थे इंडिया में, साउथ में, उनके साथ इस आर्मी के लोग जो पीछे रह गए यहीं पे इंडिया में, दे मैरिड विद देम, क्योंकि फिर वो इंडिया में ही रहने लगे थे. रेस्ट ऑफ देयर लाइफ दे लिव्ड इन इंडिया एंड देयर कल्चर इज एपरेंट. That is, it is seen, it is very clear in the martial tradition, marriage and religious rites, which are very distinct from Hindu mainstream. अब हिंदूज में जो मैरिज की जो रीति रिवाज होते हैं या जो धर्म जो होते हैं या उनके जो मार्शल ट्रेडिशन होते हैं, दिस आर ऑल वेरी डिफरेंट. हिंदूज के जो मेन स्ट्रीम हमारे जो होते हैं रीति रिवाज, उससे काफ़ी अलग कुर्ग में दिखाई देते. दैट प्रूव्स दैट अलेक्जेंडर आर्मी का जो एक छोटा हिस्सा जो यहीं पे रह गया, बाकी की लाइफ यहीं पे गुजारी उन्होंने, दे गॉट मैरिड टू द पीपल ऑफ दैट रीजन, दैट इज दैट टाइम हु आर लिविंग इन कुर्ग. लोकल पीपल से शादी की, और ये सारा दिखाई देता है आज भी उनके रीति रिवाजों में. द थियोरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट. That is, it tells us about the support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodaus. अब ये उनका ड्रेस हुआ करता था, राइट, अरब ओरिजिन का, लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट एंड नोन एज कुफिया. अब इसे कुफिया कहते थे. इट रिजेंबल्स द कुफिया worn by the Arabs and Kurds. अब जो अरबिक लोग और कुर्द जो पहनते थे खुफिया, कुर्द के जो मेन पहनते हैं, इट इज़ वेरी मच सिमिलर, दिस वेस्ट बेल्ट, एंड दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट द ओरिजिन इज ऑफ अरब, राइट. कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी. ट्रेडिशन मतलब एंशियंट टाइम से उनका ये रिवाज रहा है. इट हैड बीन अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ कि कुर्गी होम्स में देखो तो एक हॉस्पिटैलिटी का ट्रेडिशन है, वेलकमिंग नेचर है उनका. दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ ग्रेटनेस, ऑफ स्ट्रेंथ, ऑफ एनर्जी, दैट इज ऑफ वेलोर, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स. और बहुत सारी स्टोरीज है जो वो याद करते हैं अबाउट द स्ट्रेंथ अबाउट ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स. द कुर्ग रेजिमेंट is one of the most decorated in the Indian army. Decorated मतलब कि it's not decorated with flowers and this, but decorated with the stars over your badges. So the Kurg regiment army में is one of the most decorated in the Indian army. And the first chief of the Indian army itself was General Cariappa, and he was a Kurgi, of course. This shows their martial art, how good they were in it. And then they became a part of the army also. Even now, Kodaus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. तो आज भी ये जो कोडाउज हैं, they are the only people, मतलब ये एक ही ऐसी एक community है इंडिया में who are allowed to carry without license firearms. The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kurg. Now, river Kaveri जो बहती है यहाँ से, it gets all its water from the hills and forests of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish which lives, that is abounds in this water. अब महासिर बहुत बड़ी freshwater fish है जो यहाँ यहीं के पानी में रहती है. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and ripple effect in the clear water. अब squirrels भी दिखाई देते हैं यहाँ पे, फिर लंगूर जो हैं they keep on doing some mischievous act and enjoy. And what is the mischief that they create? तो वो fruit आधा खा के आधा पानी में नीचे गिरा देते हैं because they want to enjoy that splash sound
फ्रूट के गिरने की आवाज़, जो पानी में जो फ्रूट के गिरने से जो आवाज़ होती है, द स्प्लैश साउंड दे एन्जॉय. For that, they throw that half-eaten fruit in the water. And even these langurs, they enjoy the ripple effect. Ripple effect, that is, when you throw something in the water, you have that circling impact on the water. That is called the ripple effect in the clear water. For that, they throw that apple or any other fruit that they have in hand. Elephants enjoy being bathed. That is, they enjoy taking bath in the water. And yes, they themselves don't take a bath, but they are being bathed and scrubbed in the river by the mayhouts, that is the caretaker. तो ये जो caretaker है वो उनको स्नान करवाते हैं. They scrub their huge body in this river water and elephants enjoy this act. The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, mountain biking. तो जो बहुत ही लेजीली बैठे रहने वाले लोग हैं वो भी इस एरिया में आके दे गेट फुल ऑफ एनर्जी और हाईली एनर्जेटिक एडवेंचरस सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं ये लेड बैक इंडिविजुअल्स, राइट. दैट इज द लेजी पीपल हु जस्ट एन्जॉय लाइंग बैक एंड डूइंग नथिंग कि हाँ भाई चलो वेकेशन पे आए हैं, सोते रहो, लेटे रहो. They also become full of energy. They enjoy river rafting and all in this region. Numerous walking trails that is जो रास्ते हैं यहाँ पे, तो numerous walking trails in this region are a favorite with the trekkers. जो trekking पे निकलते हैं उनके लिए तो बहुत ही ये जगह favorite है because there are lot many such trekking regions. Birds, bees, butterflies are there to give you company. Then macaques, Malabar squirrels, langurs, slender loris, ये सारे अलग अलग creatures यहीं पे देखने मिलेंगे. They keep a watchful eye from the tree canopy. That is, from the top of the tree, they keep an eye below on the earth, on the land. I do, however, prefer to step aside for wild elephant. लेकिन जैसे ही मैं wild elephant का देखता हूँ, I just move aside, right? Says the author. The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view, a beautiful scene of the entire foggy, मतलब धुम्मस वाली जगह, misty landscape of Coorg. तो जब ब्रह्मगिरी हिल्स की तरफ ऊपर जाते हो तो it gives a beautiful view, a panoramic view, a scenic beauty and full of mist and all in the Coorg. A walk across the rope bridge, रस्सी का बना हुआ ब्रिज, रोप ब्रिज, when you move on it, it leads to the 64-acre island of Nisargdham. Running into the Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakup is a bonus. और वहीं पे बुद्धिस्ट मॉन्क को मिलना या वहाँ पे उनकी जो मोनेस्ट्री होती है उसे देखना, दैट इज़ अ बोनस. मतलब बोनस मतलब एक ब्यूटी तो हम देख ही रहे नेचर में, इनकी मोनेस्ट्रीज और मॉन्क्स को मिलना, दैट इज एन एक्स्ट्रा थिंग दैट वी गेट, राइट. द मॉन्क्स इन रेड, ochre color, yellow colored dress, that is robes, are amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitors searching for the heart and soul of India. और आगे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, वी मीट दिस बुद्धिस्ट मॉन्क्स, वी सी देम इन रेड कलर्ड ड्रेस, ऑकर या येलो कलर्ड रोब्स, दैट इज ड्रेसेस. और ये एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ हमें मिलती है रास्ते में. एंड यस, right here in Coorg you enjoy all these things. Now how to reach this place? Madikeri, the district headquarters, is the only gateway to Coorg, and the misty hills, lush forest, coffee plantations will cast a spell on you. It's like a magic. Spell on you means it will create a magic on you. These plantations, coffee plantations, evergreen forest and foggy hills, beautiful. Once again, heaven on earth. Find a resort, coffee estate, or a stay in a home for a truly Coorgi experience. Now, by air, if you need to go, the nearest airports are Bangalore. There are flights to Bangalore from Mumbai and to Bangalore from Ahmedabad, Chennai, Delhi, Goa, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Mumbai, Pune. And by rail, if you need to go,
The nearest railheads or the rail stations are at Mysore, Bangalore and Hassan. By road, if you need to go, there are two routes to Kurg from Bangalore. Both are almost the same distance, about 250 to 260 kilometers. And the route via Mysore is the most used one. Frequented one मतलब ज़्यादातर यही route use होता है via Mysore. The other route is via Neelamangal, Kunigal and Channarayanapattana. And the last but not the least is the third part of this chapter is tea from Assam. Now this very interesting is like in a story form. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajvir's classmate at school in Delhi. And Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam. Pranjal has invited his friend Rajvir to visit his home at Assam during the summer vacation. तो दो friend हैं, Pranjal and Rajvir, both are classmates, good friends at Delhi school. And Pranjal's father is a manager at the tea garden in Assam. तो Pranjal has invited his close friend Rajvir कि भाई आ जाओ आसाम, हम साथ में जाते हैं इस वेकेशन में and I'll show you the beautiful places in Assam. So let us also enjoy this beautiful place, at least through words and through just imagination. So chai garam or garam chai. A vendor means जो आवाज़ लगा के कोई चीज़ बेचने निकलते हैं, जैसे सब्जी वाला, फ्रूट वाला. वैसे प्लेटफॉर्म पे हम सुनते हैं कई बार चाय गरम. So a vendor called out in a high pitched voice. High pitched voice मतलब ऊंची आवाज़ में वो चिल्ला रहा था चाय बेचने के लिए. He came up to their window and asked, "Chai साहब, give us 2 cups," said the chai, that is the Pranjal. They sipped the steaming hot liquid. Steaming मतलब गर्म जिसमें से you could see the steam coming out. धुआं निकलता हो. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Do you know that every 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajvir said. अब आसाम का रहने वाला था प्रांजल. राजवीर पहली बार जा रहा था, but Rajvir had already collected the various or here I would say lots of knowledge that he had collected through reading books and all about Assam, right? तो उसने प्रांजल से कहा that 80 crore cups of tea are drunk, learn this, every day throughout the world. You, exclaimed Pranjal, that is wow, tea really is very popular, that means. The trains started moving out of the station. Pranjal buried his nose in the detective book again. अब प्रांजल को इंटरेस्ट था ज़्यादातर डिटेक्टिव बुक रीड करने में, सो ही बरीड हिज नोज मतलब ही स्टार्टेड रीडिंग. Rajveer too was an ardent, means very great fan of detective stories. But at this moment, he was keener, means he was more interested on looking at the beautiful scenery outside the train window. It was green everywhere. Rajveer had never seen so much of greenery before, as he was a city boy. Then the soft green paddy field, that is the rice field, gave way to tea bushes. मतलब फिर बीच में आ गए green rice field. It was a beautiful view. Against the backdrop मतलब उसके पीछे की ओर क्या दिख रहा था? घने जंगल, that is densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched out as far as your eyes could see. तो दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ और tea gardens, greenery, anywhere you see. Dwarfing the tiny tea plants was tall, sturdy shade trees. Now see, tea plants के बाजू में मतलब टी प्लांट बन जाते थे लाइक ड्वार्फ, छोटे. उनके बाजू में ह्यूज स्टर्डी, दैट इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग shade trees were there, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. और फिर बहुत सारे rows थे bushes के, orderly मतलब टेढ़े मेढ़े कहीं पे भी bushes grow नहीं हुए थे, proper rows थे, right? And in the distance was an ugly building with smoke coming out of the tall chimneys. और दूर कहीं पे एक बहुत ही पुराना बिल्डिंग था जिसके बड़ी बड़ी चिमनीज के बाहर स्मोक बिलो हो रहा था, मीन्स इट वॉज कमिंग आउट. हे, अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड आउट एक्साइटेडली.
तो राजवीर एकदम से चिल्लाया, ओह अ टी गार्डन. Pranjal was born over here, of course, so he was not excited. So Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajvir's excitement. उसने नहीं, naturally, if you had already seen some place and your friend is seeing it for the first time and getting excited, wow, तो तुम थोड़ी ना उसके साथ कहोगे, oh wow. No, you had already seen and you maybe were born and brought up in that place. You shifted to a hostel since last 1 or 2 years. अब तुम अपने ही गांव आ रहे हो, अपने ही शहर आ रहे हो, तो you will not be excited. Oh wow, लॉ गार्डन. लेकिन जो पहली बार आ रहा है, naturally वो excited होगा देख के. Right? It's just an example I gave you about law garden. So Pranjal was least excited, but Rajveer, who was coming there for the first time, he was highly excited. Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. अब देखो कैसे राजवीर ने सारी नॉलेज इकट्ठा करके रखी हुई थी, सब कुछ रीड करके रखा हुआ था आसाम के बारे में बिफोर कमिंग टू आसाम, राइट? तो उसने कहा, यस दिस इज अ टी कंट्री. सबसे ज्यादा वर्ल्ड में अगर टी के प्लांटेशन होंगे तो वो आसाम में है. यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम. और यहाँ पे पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी, इतने टी गार्डन्स है देखने के लिए आसाम में. आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी. और राजवीर ने कहा प्रांजल को कि मैंने हो सके उतना आसाम आने के पहले मैंने काफ़ी कुछ रीड कर लिया है उसके बारे में. नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी, बट देर आर मैनी स्टोरीज अबाउट इट, राइट? देर आर मैनी लीजेंड्स. अब बेचारे प्रांजल जो आसाम का ही था उसी को नहीं पता था. उसने कहा, टेल मी what stories? Now Rajveer tells him about the story that actually who discovered tea. Well, there's one story that goes this way about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. मतलब पीने के पहले हमेशा पानी गर्म करके ही वो चाइनीज एम्परर पीते थे. One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर. अब हुआ ये कि थोड़े बहुत पत्ते डंडी पे से, ट्विग दैट इज पतली सी डंडी पे से उनके पानी में गिरे जो उबल रहा था, राइट? दैट वाज बीइंग बॉइल्ड एंड इट गेव दैट वाटर डिलीशियस फ्लेवर. इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स. टेल मी सम अदर स्टोरी, स्कॉफ प्रांजल. नाउ वी हैव वन मोर इंडियन स्टोरी हियर, सेज हिज फ्रेंड राजवीर. बोधिधर्म, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, दैट इज जैसे हम कहते हैं साधु संत, फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म. सो बोधिधर्म, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. Eyelid मतलब this, the top part, that उसने उसी को काट दिया, right? A बोधिधर्म is a name of a Buddhist follower, ascetic, that is once again साधु संत, right? उसने अपनी eyelid कट कर दी थी because when he was meditating he felt sleepy. और हम अगर पढ़ते हुए आंख बंद हो जाए तो हम लंबे लेट ही जाते हैं, राइट? दैट इज द डिफरेंस. आई एम नॉट टेलिंग यू टू कट ऑफ द eyelids, but it's just the comparison of that time, the students and the followers and sadhu sant, and you never ever can compare it with today's people. 10 tea plants grew out of the eyelids. अब कितने tea plants grow हुए उसमें से? 10 out of those eyelids that he had cut off. The leaves of these plants when put in hot water and drunk banished sleep. इसलिए लोग कहते हैं जब नींद आए चाय पी लो, you will be fresh. That is एक लोगों की मान्यता है. That is what we believe since years. Yes, I too am a great lover of tea. कि बहुत जैसे अगर नींद आए and if I have to be awake for some work, naturally I'll have tea, right? Afternoon before lecture I do have tea. That is when in institute. बिना टी के
lecture, I won't be, like energetic. तो चाय चाहिए before not all the lectures, one time, that is say 1 o'clock या 1:30, at 2 o'clock when the lecture starts, उसके थोड़े टाइम पहले just a cup of tea. That gives, मतलब कि वो नींद भगाए. So it is believed कि इन 10 टी प्लांट जो ग्रो हुए थे आईलिड्स के बाहर, उसके पत्ते पानी में डालने से नींद गायब हो जाती थी. दिस अगेन इज अ बिलीफ. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, सेड राजवीर, एज फार बैक एज 2700 BC, मतलब हजारों साल पहले. इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी, चीनी हम कहते हैं चीनी लोगों को भी, चीनी हिंदी में हम कहते हैं शक्कर को भी, शुगर, right? These are the words that came from Chinese. Tea came to Europe in 16th century, that is somewhere in 1500, and was drunk more as medicine rather than as a beverage. Then as a beverage मतलब ज़्यादा मेडिसिन में यूज होते थे टी के पत्ते rather than as a tea to be drunk. The train clattered. It entered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Now, Pranjal's parents were naturally waiting for them at the station. Soon they were driving towards Dhekiabari, the tea garden that was managed by Pranjal's father. अब बहुत ही जल्द वो कहाँ पे ड्राइव करते हुए आ गए, ढेकियाबारी, जहाँ पे एक बहुत बड़ा टी गार्डन था जिसके मैनेजर थे प्रांजल's फादर. 1 घंटे के बाद द कार वियर्ड, दैट इज मूव्ड शार्पली अप द मेन रोड. फिर 1 घंटे के बाद मेन रोड पे आ गए. दे क्रॉस अ कैटल ब्रिज, एंटर ढेकियाबारी टी एस्टेट. ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, मतलब पत्थर वाले रोड, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वह एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस. तो दोनों बाजू देखो रास्ते के तो सिर्फ टी गार्डन, all neatly pruned, neatly cultivated to the same height, एक ही हाइट के. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, अब ये स्किल्ड लोग होते हैं, सिखाया जाता है हाउ टू प्लक द टी लीव्स. सो ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट एट द बैक, राइट, इट्स ऑलवेज सीन कि यहाँ से ऐसे रस्सी लेके पीछे देयर इज अ बिग बास्केट दैट इज हैंगिंग ऑन द बैक. So they pluck and put it, they pluck and put it at the back. So group of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly grown leaves. Pranjal's father slowed down to allow a tractor to pass by, pulling a trailer load of tea leaves to pass. अब प्रांजल के फादर ने अपनी कार स्लो कर दी because he was allowing a tractor that is full of loaded with tea leaves. He allowed the tractor to move ahead. This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? Rajveer asked. अब राजवीर ने पूछा प्रांजल के फादर को that isn't this the sprouting period, मतलब second flush, and it lasts from May to July and is the best tea. It provides you the best quality tea between May to July. Pranjal's father said in surprise, wow, you seem to have done your homework before coming. मतलब it's very necessary even for us before we move on to जैसे टूर पे निकलते हैं 8-10 दिन के लिए, तो उस जगह की स्टडी पहले कर लो, इस वेदर, वहाँ पे क्या चीज़ें मिलती है, नॉट ओनली फॉर मदर शॉपिंग एंड सिस्टर शॉपिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लॉट मेनी समथिंग दैट you would never get to see in our state, in our region, something different. Move over there and visit those places. So Pranjal's father was in surprise that yes, before coming over here to Assam, dear, you have already done your homework, I think so. Rajveer said, yes, Mr. Barua, but I hope to learn much more while I'm here. लेकिन आपसे काफ़ी कुछ मुझे जानने मिलेगा at my stay over here at your place. So I hope that you will support me in this and you will tell me many more things about this region, about tea and about Assam. So thank you very much and take care.
We meet soon. This is what I am telling to you, dear. Dialogue completes over here about Rajveer and Pranjal's father. So once again, don't expect papers to be unit test, checked papers to be submitted to you if you provide it late after 3 or 4 days. जैसे वेडनेसडे एग्जाम होती है, सैटरडे के बाद अगर सबमिट करते हो, इट माइट बिकम डिफिकल्ट फॉर अस टू सेंड यू वेरी सून. सो देन वेट एंड वॉच, राइट? क्योंकि उसके बाद वेरी नेक्स्ट लॉट कम्स टू अस. So you will be in loss. Rather than that, I would say that please send it on time. We give you 3 days time, and homework to be provided on Shri 3E in Shri Institute@gmail.com, or test देनी है on 10 exam papers @gmail.com. Please don't mix match मत कर लो, यहाँ का वहाँ का यहाँ. बहुत सारे बच्चों ने 10 एग्जाम पेपर्स पे होमवर्क भेजना शुरू किया. सो अगेन दैट विल नॉट बी चेक्ड, एंड 10-15 दिन 20 दिन के बाद फिर से एक मैसेज आ जाएगा, योर चाइल्ड हैव नॉट सबमिटेड दी होमवर्क. You might have submitted your test papers, you might have submitted your homework, but first of all, wrong place you have submitted. Second, late submission will not be checked soon. You will have to then wait. ठीक है? Keep on checking your WhatsApp daily. I'll send you through WhatsApp your test papers. Clear? So thank you very much. Take care. And in the next lecture, we start with SS. But before that, I'll be completing a poem, Amanda. So till then, revise and be prepared for your English test. Thank you. Take care. Thank you once again.